Very good morning, friends. I hope you're all safe and healthy. Well, in this particular month, I've been carrying out my Did You Know Season 2, in which I have talked a lot about Index 110. Here comes another video on a small input on Index 110 regarding the status change of an investment entity. As we already know that in terms of making a consolidated financial statements, the investment entities are exempt from preparing any kind of consolidated financial statements. So now the question what comes to the mind is, let's say if it changes the status from an investment entity to a non-investment entity or vice versa, then what are the accounting implications in this particular case? In this particular video, I'm going to give you the comparative position in terms of two contrast cases when it is no longer an investment entity and when it becomes an investment entity. Let's find out the accounting implications in detail in this video. अनअकैडमी पर एक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है और जिसके अंदर आप सीए फाइनल ग्रुप 1 या सीए फाइनल ग्रुप 2 में प्लस बैचेस या आइकॉनिक बैचेस लेते हैं तो इस वक्त आपको रिडक्शन मिलेगी इफेक्टिवली 20% की। ये आपके सामने एक कंपैरेटिव चार्ट है और इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें अलग अलग प्लान्स 12 मंथ्स या 24 मंथ्स या 36 मंथ्स के प्लान्स लेते हैं तो इसके अंदर आपको 10% रिडक्शन है और प्लस आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे CAKB10 तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा, यानी आपको इफेक्टिवली 20% डिस्काउंट इसके अंदर मिलता है। बस समय बड़ा कम है। अब ये लगा लीजिए कि इसके अंदर आपकी 18 सितंबर तक ही ये चीज़ें वैलिड है। तो 18 सितंबर से अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो दिस इज द राइट टाइम। इसके अलावा आपको मैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स भी दे दूं। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर सीए फाइनल ग्रुप 1 के अगर अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए वो भी अवेलेबल है और ग्रुप 2 चाहिए वो भी अवेलेबल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसके अंदर 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 4 मंथ्स। और अगर आप 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मतलब बम्पर ऑफर दोनों तरफ से है। आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स भी एक्स्ट्रा है, डिस्काउंट भी अच्छा खासा है। आपको 10% डिस्काउंट मिलना है प्लस मेरे कोड इस्तेमाल करने पर CAKB10 पर 10% और मिलना है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मंथ्स भी है। कॉम्बो ऑफर भी आप ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। ऐसे में आपको 3 मंथ्स पर 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको 12 मंथ्स पर 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 24 मंथ्स पर आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन एक है लेकिन उसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं क्योंकि आप सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के हैं वो आप लाइव देख पाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर आप अनलिमिटेड व्यूज पर एक्सेस कर सकते हैं और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। अनअकैडमी पर हर 4th सेशन एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी चलती है। तो एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल बेनिफिट्स। और ये हमारे कुछ प्राउड लर्नर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस ली और ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आप देख सकते हैं अचीव की। आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग एंड आई थिंक यू कैन डू इट। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आइए लेट्स क्रैक इट। Well, as you can see in this particular chart, I have divided my inputs in terms of 2 different cases. The case number 1 is talking of that the entity ceases to be an investment entity. That means it was an investment entity earlier, now it becomes a non-investment entity. Which means in this particular case, earlier it was exempt from consolidation and now it is required to do the consolidation. And the moment it is required to do the consolidation, you need to first of all consider that what is the date of acquisition. And since in this particular case, the date of acquisition is required so that we can do you can say the entry for the purpose of consolidation, which is done by virtue of Index 103. So the date of the change of the status, the date when the status made a change, that is considered to be a deemed acquisition date for Index 103. Why Index 103? Because a consolidation as per 110
Ind AS 103 will precede that consolidation. For the purpose of making a consolidation, you will be required to do an acquisition accounting entry. And then the fair value of the subsidiary at the date of deemed acquisition date would represent the trustworthy deemed consideration for calculating a goodwill or a bargain purchase gain. So the two important inputs is what is the date of acquisition, the date of change of the status. And number two, when you're going to calculate the goodwill or the bargain purchase gain, the fair value of the subsidiary becomes, you can say, the deemed consideration for the purpose of calculating goodwill. On the contrary, if you look at the case number two, an entity becomes an investment entity. That means earlier it was a non-investment entity which was being consolidated. Now it's switched over to an investment entity. So we need to seize the concept of consolidation. And in order to seize the concept of consolidation, we will seize it from the date again when the status changes. And what is the accounting implications in this case? Just do the normal accounting, which is done in terms of loss of control. De-recognize the assets and liabilities, de-recognize the goodwill, de-recognize the NCI, and any difference which appears on account of the change in the status, the difference in the entry is taken to the P&L. Which indirectly means that what you need to do at the time of deconsolidation is you need to basically put a reverse entry which is done under Ind AS 103. So these are the two possibilities which can arise in terms of investment entity. That means it is no longer an investment entity, case one, where we need to apply the parameters of Ind AS 103. So considering an acquisition date is important and calculation of the goodwill requires a deemed consideration. And the other case is that it ceases to be consolidated. That is simply considered as a deconsolidation, a reversal entry of Ind AS 103. Isn't that pretty interesting? That's all in this particular video. Catch up for more interesting videos coming on consolidation. Thank you, take care, and bye-bye.